Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, Air Around Us. Learning objectives, air components, importance of fresh air. How long can you stay without breathing? You need to breathe in air to stay alive. Air has many things in it. Do you know which part of air do you need? आप कितने टाइम तक अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रख सकते हैं? ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि ब्रीदिंग हमारे सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इन दिस चैप्टर वी गोना टॉक अबाउट एयर कंपोनेंट्स एंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. सो लेट्स स्टार्ट. Air is all around us. All living beings need air to breathe. We cannot live without air. Animals and plants also need air to live. The air is in water also. Fish use air mixed in water to breathe. We cannot see or touch air. We can only feel air when it moves. If you blow air into a balloon and then release the air near your face, you can feel air gushing out of the balloon. Air हमारे आसपास है, चारों तरफ है. We can feel it, but we cannot touch it, right? Every human being and every living being needs air to breathe. And without air, life is not possible. अब आपको पता है आपके आसपास जब एयर मूव करती है, ओनली देन यू फील इट. अगर आप बलून में एयर ब्लो करते हैं एंड देन उसको रिलीज करते हैं अपने फेस पे, तो आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा दैट एयर इज गशिंग आउट ऑफ द balloon. Activity time. You have already studied properties of air in the earlier book. Recall and answer what properties of air do the following pictures tell you. आप प्रीवियस क्लास में भी एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ के आए हैं, तो आपको रिकॉल करना है एंड आंसर करना है इन पिक्चर्स में कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है. What does air contain? Air is a composition of many things. It contains oxygen, water vapor, dust particles, smoke, germs and other gases. Smoke, dust particles and germs make the air dirty. Air is a mixture of many gases. Do you know that? अब इसके अलावा इसमें डस्ट पार्टिकल्स होता है, स्मोक होता है, जर्म्स होते हैं जो कि एयर को डर्टी करते हैं. Oxygen. Air is a mixture of gases. Air supplies us with oxygen, which is essential for us to live. Humans and animals breathe oxygen to stay alive. Oxygen, जो आपकी एयर में पाई जाती है, आपको पता है कि it is very important for all the living beings. Water vapor. Moisture in the air is called water vapor. The water changes into water vapor and mixes with the air. When you put some wet clothes out in the sun, what happens then? The clothes become dry as the heat of the sun changes water into water vapor. एयर में जो मॉइस्चर होता है दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर. आपने कभी नोटिस किया, आप वेट क्लोथ्स रखते हैं एंड देन वो सूख जाते हैं, वो पानी कहाँ चला जाता है? एक्चुअली वो इवेपोरेट हो जाता है. सन जो है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है. The heat of the sun keeps changing water in lakes, rivers and seas to water vapor, so air always contain water vapor. अब sun की heat की वजह से evaporation आपका होता रहता है, जिसकी वजह से air में हमेशा ही water vapor होता है. Dust particles. Air contains many dust particles. Have you seen sunlight coming inside a room through a window? What are the tiny things that you see in the ray of light? These are dust particles. Dust particles are not good for our skin as they cause allergy. एयर में आपके डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. आपने कभी सनलाइट को ऑब्जर्व किया है जब वो विंडो से आते हैं? आपको लगता है कि दैट इज रे ऑफ लाइट है या रेज है सनलाइट की, बट एक्चुअल में वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. एंड डस्ट पार्टिकल हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं होते बिकॉज इनकी वजह से एलर्जी होती है. स्मोक. Smoke is given off when something burns. You must have seen smoke coming out of scooters, cars and buses. Factories also emit a smoke. This smoke is harmful for us. It is harmful for plants and animals also. When we breathe in polluted air, it makes us ill. आपको पता है smoke, vehicles से smoke निकलता है, factories से smoke निकलता है, and this smoke is injurious for all of us, not for human beings, but for plants and for animals also. Because when we breathe in this polluted air, it makes us sick. Germs. Air also contains germs which makes us ill. Germs come out when we cough or sneeze and mix with air. The air we breathe in is mixed with all those harmful things. Dirty air makes us fall ill. This air is also harmful for plants and animals. एयर में आपके जर्म्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं. तो जर्म्स आपके जब whenever we cough or sneeze, तो क्या होता है कि आपके जो जर्म्स हैं वो बाहर आते हैं, then mix up with air. And whenever somebody breathes in this air, तो वो क्या होता है? बीमार हो जाते हैं. इसके अलावा ऐसी एयर जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होती है. Remember that we should always cover our face when we cough or sneeze. You should always cover your face whenever you cough or sneeze. We need fresh air. The air we breathe in should be clean. Fresh air keeps us healthy.
Plants make the air clean and fresh. We should grow more green plants around us. We should keep doors and windows open to let the fresh air come in. We should not cover our face when we sleep. आपको fresh air की requirement है. You should always breathe in clean and fresh air. तो fresh air कहाँ से आएगी? When you will plant more and more trees. आप हमेशा doors and windows को भी आप open करके रखें so that fresh air आ सके. And whenever you sleep, do not cover your face. Fact file. Germs are small living things that grow in dirty places and make people ill. Germs आपको पता है बहुत छोटे living thing होते हैं जो कि लोगों को बीमार करते हैं. Fact file. Germs are so small that we cannot see them with our eyes. We can see them only through a microscope. Germs आपके बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें हम naked eye से नहीं देख सकते and उनको देखने के लिए हमें microscope की ज़रूरत होती है. Moving air. Wind blows in a definite direction. A wind vane helps us to know the direction of the wind. Air moves at different speeds. When air moves gently, it is called a breeze. A fan moving at a low speed gives a gentle breeze. It makes us feel cool and pleasant. When air moves fast, it is called wind. Strong winds are able to move heavy objects effortlessly. A wind makes dust, bits of paper and dry leaves fly. देखिए wind आपके एक definite direction में ब्लो करती है. विंड पेन आपको ये नज़र आ रहा है. इट हेल्प्स टू नो कि विंड कौन सी डायरेक्शन में ब्लो कर रही है. अब एयर की डिफरेंट स्पीड्स होती है. अगर एयर जो है जेंटली मूव कर रही है देन इट इज़ कॉल्ड ब्रीज. ये बहुत ही कूल और प्लेजेंट हमको फील करती है. इसके बाद एयर जब फास्ट हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड विंड. और विंड की वजह से जैसे डस्ट है या आपके पेपर्स के टुकड़े हैं या फिर ड्राई लीव्स है वो ईजिली फ्लाई करते हैं. A very strong wind is called a storm. A storm can blow away things like clothes, weak sheds, or can uproot the trees and damage buildings. Storms at sea can sink ships. A very strong wind is called a gale. A gale can cause a lot of damage to property and people. अब अगर स्ट्रॉन्ग विंड है तो उसे हम कहते हैं स्टॉर्म. स्टॉर्म यानी कि तूफान. अब जब तूफान आता है यानी स्टॉर्म तो क्या होता है कि ट्रीज अपरूट हो जाते हैं, बिल्डिंग्स आपकी डैमेज हो जाती हैं, राइट. आपके क्लोथ्स या कोई भी वीक शेड है वो ब्लो अवे हो जाते हैं. और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है दैट इज़ कॉल्ड गेल. एंड गेल भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी डैमेज करती है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है. फैक्ट फाइव. द पावर ऑफ द विंड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए विंड मिल. विंड मिल के बारे में आपने सुना होगा. विंड मिल का एक्चुअली यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और ये आपकी कब होती है? इसमें आपका विंड की पावर यूज़ की जाती है. Summary. Air is present all around us. Air is a mixture of gases. Air contains oxygen, water vapor, smoke and dust particles. ये देखिए air आपकी mixture है gases का जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं. We need fresh air to stay healthy. Plants make the air clean and fresh. Storms damage trees and buildings. A wind vane shows us direction of the wind. Wind की direction आपको कौन show करता है? Wind vane. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.